Assalamu alaikum once again. Satya Gondal here from Javed Publishers. Today we will be continuing with question answers of Kids English Grade 5, Chapter number 8, Rock Climbing. So let's start. Chapter number 8, page number 55 pe, we will be doing question and answers now. Question number 1 is, how did Muhib come to know about rock climbing? The answer is, he was watching an interview of the first Pakistani mountaineer Nazir Sabir, in which he talked about rock climbing as a popular sport among youngsters. And this made Muhib interested in rock climbing. Question number 2, what is the importance of outdoor activities? The answer is, they are helpful in developing capabilities of children. Question number 3, write a few lines on the benefits of outdoor activities. The answer is, they help in exploring child's physical and mental strength. These activities also keep a child active and energetic. Question number 4, what position did they get in rock climbing competition? The answer is, Muhib won the first position and Asad got third position. Question number 5, where did they go while returning from Murray Hills? What did they do there? The answer is, they went to Patriata and enjoyed themselves at cable car travel. Second section is about oral communication, in which we will be doing long and short vowel sounds. You all know what vowels are. A, E, I, O, U are your vowels. So let's learn about what is meant by long vowel sound and short vowel sound. Long vowel sounds की quality ये है कि they are pronounced same like the sound of the letter. For example, when you say bake, इसमें आपके पास vowel है A, लेकिन A की sound A की तरह ही आ रही है, bake. Short vowel sound की quality ये है कि they do not sound like the letter themselves. For example, you say bed. अब यहाँ पे B-E-D bed में E is the vowel. Sound इसकी E है, लेकिन sound actually क्या आ रही है? A. Bed. So short vowel sound की sound letter के मुताबिक नहीं होती, और लॉन्ग वावल साउंड की पहचान ये है कि उसकी साउंड लेटर की साउंड की तरह होती है. लेट्स डू द एग्जांपल्स. लॉन्ग वावल साउंड्स में आपके पास है पेनफुल, ए वावल साउंड के साथ. ई के साथ आपके पास एग्जांपल है वैली, जिसमें ई की साउंड ई की तरह ही आ रही है. आई और ई फाइन, इसमें आई की साउंड आई की तरह आ रही है. ओ रोड. अगेन यू ह्यूज, यू की साउंड यू है, और यहाँ पे इस लेटर इस वर्ड ह्यूज में इसकी साउंड भी यू की तरह ही आ रही है, ह्यूज. अब शॉर्ट वावल साउंड्स के एग्जांपल्स देखते हैं. रैट. अब यहाँ पे ए की साउंड ए की तरह आ रही है, ए की तरह नहीं आ रही. इट्स नॉट रेट, इट्स रैट, इसलिए ये शॉर्ट वावल साउंड है. फिर बेड, सिट, पॉट, कट, ये सारी शॉर्ट वावल साउंड्स हैं, क्विक वावल साउंड्स हैं. दैट्स व्हाई वी कॉल देम शॉर्ट वावल साउंड्स. लेट्स डू द क्वेश्चन. आइडेंटिफाई दीज वावल्स एज लॉन्ग और शॉर्ट साउंड्स. द फर्स्ट वर्ड इज सेट. दिस इज शॉर्ट वावल साउंड. हॉप, शॉर्ट वावल साउंड. हग, शॉर्ट वावल साउंड. बेक, long vowel sound. Lick, short vowel sound. Kite, long vowel sound. Back, long vowel sound. Huge, long vowel sound again. Hope, long vowel sound. Beat, long vowel sound again. Then we have a dialogue in which we are going to learn about how to use sentences and words for taking turns. So let's read the dialogue. Muhib says, Assalamu alaikum father, I captured many pictures on the trip. May I show you my pictures first? Father says, Wa alaikum assalam. Sure, show me your pictures. Asad, Papa, I will show you mine first. Mine are more beautiful. Muhib, angry, no, let me show first. Father says, children, wait. I shall see your pictures,
turn by turn. Muhib, you came first, so you show me your pictures first. Then it will be your turn, Asad. Muhib says, thank you, Papa. Father says, it's good to wait for your turn. Asad says, yes, you're right. I'll wait for my turn. And the next question is, you can role play this dialogue in pairs and you can tell students how to take turns with the help of this dialogue. So इस dialogue में जो हमें most important sentences नज़र आ रहे हैं वो ये हैं कि you show me your pictures first, then it will be your turn, and father says it's good to wait for your turn, and Asad says I will wait for my turn. So students को ये इसकी importance बताने के लिए कि turns लेना बहुत ज़रूरी है. It's not good कि आप सब एक साथ कुछ दिखाने बैठ जाएं. वेट फॉर योर टर्न, और उसमें आप ये कर सकते हैं कि जो पहले आया है पहले उसको अपना वर्क दिखाने दें एंड देन द अदर पर्सन कैन शो देयर वर्क. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अबाउट मैप कीज़ एंड लेजेंड्स. इसमें आपको एक मैप दिया गया है एंड यू आर बीइंग आस्क्ड टू आइडेंटिफाई द कीज़ एंड लेजेंड्स. एक मैप में कीज़ उस मैप के साइंस और सिंबल्स होते हैं. जैसे कि ये मैप जो आपको दिया गया है उसमें कीज़ आपको नज़र आ रही हैं. नीचे पार्क, रेजिडेंट, सिटी, रोड्स, रेलवे, कैनाल एंड रोड्स अगेन. तो ये इसके सारे साइंस एंड सिंबल्स हैं. और कीज़ एंड लेजेंड्स दोनों मिलकर आप ये कहते हैं कि फीचर्स, साइंस और सिंबल्स एक मैप में आपके बनाते हैं कीज़ एंड लेजेंड्स. इसमें आप डायरेक्शंस भी ले सकते हैं जैसे कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अबाउट लैंग्वेज फोकस एंड वी हैव टू डू कंपाउंड वर्ड्स. आप सबको पता है कंपाउंड वर्ड्स आर two words taken together to make a compound word. For example, football. जब इन दोनों को हम इकट्ठे लिख देंगे तो it would become a compound word, football. Let's complete this exercise. Sentence A, sunflower. Sentence B, grape wine. Sentence C, software, W-A-R-E ware. Sentence D, dish rack, R-A-C-K rack. Sentence E, birthday, D-A-Y day. Thank you so much for watching. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. Keep watching and keep yourself connected to Javed Publishers Bolti Kitabain.